of value-added course on NLP. So basically, I think most of you have the entire syllabus of NLP. So I'm just sharing it in WhatsApp group, so it will be easy for you to understand the concept. So there are basically 5 modules or 5 units. So in unit 1, we will discuss the basic concepts of NLP, what is the use of NLP, what are the different tasks of NLP, and then after that, what is the actual meaning of linguistics, why we need the concept of linguistics in NLP, and the third thing is what are the different stages of analysis in NLP. Means we have different kind of stages in NLP to analyze the languages. So in that we will have different kinds of different types of stages. So this is the content of unit 1. Now coming to the next unit, that is unit 2. The content of unit 2 is NLP tools and approaches. There are basically different types of NLP tools which will be used by us in which will be used by us in next session. Means there will be Python. So we will basically perform our program on Python. So we will discuss about different kinds of NLP tools and its approaches. Then after that, we will proceed for the main content, that is data cleaning and pre-processing. That is the main part of NLP. Inside that, we will analyze the concept how we can process the text data, because nowadays we are working with the concept of machine learning and deep learning. Okay, so now the concept has been changed. Now we need to process the text data, because nowadays we are facing big data issue, because big data each and every day million and trillions of data is basically produced by the company and even by different sources. So we need to process that data, and that data is not in proper format. That data is basically in word format, text format. So word format, the different format data cannot be processed easily. So in that situation, we need to analyze a basic concept, that is NLP, which is basically used to perform the analysis of data, and that data should be the text data. So we will analyze how we can classify text data, how we can analyze text data, and what will be the use of an analytical concept of text data. Because अगर हम टेक्स्ट डेटा यूज कर रहे हैं तो उसको हम एनालाइज करके क्या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज नाउ डेज वी आर वर्किंग विद चैट बॉट्स, Alexa, Siri. So these are totally based on concept of NLP. ये सारी चीजें जो आप पढ़ोगे अभी इस सेशन में या बात करेंगे हम लोग, so ये सभी कहीं ना कहीं हमारा NLP के ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है. Okay, now coming to the third unit, and inside that we will analyze different kind of pre-processing techniques in NLP, because in NLP there are different kinds of techniques. So in unit 3 we will analyze the concept of data tokenization, then streaming, then limitization. So these are the concepts we will analyze in unit 3. After that we will again focus on different pre-processing techniques in NLP, that is POS tagging, remove word stop, and one more thing is that after all the pre-processing techniques, we will use a case study to analyze the concept of NLP. Okay. Now coming to the last unit, that is basically totally based on the practical concept of NLP. So inside that we will take a case study on email spam detection. So we will identify, is that email that we are getting is a spam mail or not. So that can also be done by the help of NLP, because email is generally in word format, it is in text format. So how we can perform NLP concept to analyze that email is spam or not. So this is the concept. Okay. Okay, then after that we will use another case study, and that case study is totally it will analyze the movie review analysis, and that is totally based on the concept of NLP. Then after that we will use some kind of different data type that is basically used to analyze the concept of NLP. So this is the entire content of the NLP course. So we will cover it in upcoming days. So in today's session, firstly we will discuss the concept of NLP. So what is NLP? It is a very important concept, because we are just focusing on the concept of NLP with Python. So firstly we need to analyze the concept of NLP. What is NLP? NLP is just an abbreviation. It is basically known as natural language processing. Okay.
What is natural language processing? Can anybody tell about natural language processing? The full form of NLP is known as natural language processing. So natural language processing is a part of like artificial intelligence. So before that NLP, we are just working with the concept of machine learning, deep learning, transfer learning. Okay. So these are the part of artificial intelligence. So machine learning, we basically need to analyze different kinds of data. The data should be in proper format, like in CSV format, like in Word format, like in image format. So we can only process this data. Okay. But the thing is that we cannot process the word data and the image data together. Sometimes we need to analyze the word data properly, because and that thing is not possible by the concept of machine learning. So sometimes machine learning techniques will be felt, it will not give some it will not give that much amount of like accuracy. So for that purpose, we need to shift it toward the concept of natural language processing. So natural language processing is also part of like artificial intelligence. Okay, so inside that we will understand that how humans and computers interact with each other, because the process which we are going through means जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज. इवन हम जो बात करते हैं लाइक इंग्लिश इज अ नेचुरल लैंग्वेज, हिंदी इज अ नेचुरल लैंग्वेज. सो हाउ मशीन विल अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? एज यू कैन सी कि अभी जो आप गूगल यूज कर रहे हो, सो देयर इज सम काइंड ऑफ वॉइस असिस्टेंट. सो जब भी आप कोई भी क्वेरी करते हो गूगल से, सो हाउ गूगल विल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? दैट इज पार्ट ऑफ लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. कि सिस्टम अभी क्या कर रहे हैं, आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो, जो भी बातें आप कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप सिस्टम से पूछ रहे हो, सिस्टम विल इजीली रिकॉग्नाइज योर लैंग्वेज. Okay, system will easily recognize your voice, system will easily recognize your language which it can be different type of language like Hindi, English, Sanskrit, Bangla, it will be different. Okay, so system क्या कर रहा है, वो सारी languages को समझ रहा है, and then after that आपकी जो query हो रही है उसका आपको result show कर रहा है. So आप लोग ये लाइव एग्जांपल में देख भी रहे होंगे गूगल असिस्टेंट में, तो ये आपको वहां पे चीजें एनालाइज हो जाएगी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि जो एनएलपी है ये काम कैसे करेगा? बिकॉज मेन जो कॉन्सेप्ट होता है एनएलपी का, इट इज बेसिकली यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड डिकोड ह्यूमन वर्ड्स. ओके, हम जो बातें बोल रहे हैं, सिस्टम उस चीज को कैसे समझ रहा है? या तो उसको रीड कर रहा है, या तो उसको रीड करने के बाद रीड कर रहा है, या वो मतलब सुन के वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, देन आफ्टर दैट वो उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, एंड फाइनली उसको डिकोड कर रहा है. ओके, सिस्टम ना तो इंग्लिश समझ रहा है ना तो हिंदी समझ रहा है, लेकिन जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो तो नेचुरल लैंग्वेज है. तो सिस्टम उसको क्या कर रहा है, फर्स्टली उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, देन आफ्टर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड लास्टली उसको डिकोड कर रहा है. सो दिस इज द मेन एम ऑफ एनएलपी. जब भी आप कोई भी एक मशीन डिजाइन करोगे, जब भी आप पाइथन में कोडिंग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाउ एनएलपी इज वर्किंग, एनएलपी कैसे काम कर रहा है. आपने जैसे हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो मशीन लर्निंग में वी नीड टू ट्रेन एंड टेस्ट आवर डेटा सेट. These are the two things, na? Training and testing. So firstly, we need to train our system, and then after that, we need to test our system, the system which we are going to implement in our project or in our work. Okay. So concept is different in NLP. NLP में जब भी कोई आप एक system implement करते हो, तो system firstly will read that data, it will recognize that data, जो data हम process कराना चाह रहे हैं. Then after that, it will understand, and lastly it will decode that data. So decoding will be in different format, it is not in same format, because it will be not binary decoding. Okay, it will be in different format of decoding. We will discuss it in late upcoming days. Yes, is there any question? Okay, now the next thing, because we are working with the concept of like NLP, so sometimes we also use the concept of like machine learning. Okay, machine learning is also working with the concept of like human language, means it will obtain the meaning of human language machine, because each and everything like deep learning
machine learning, NLP, transfer learning, these all are the parts of like AI. These all are the branches of AI. Okay, so machine learning is also working in the same way, but the most efficient way is known as NLP, because NLP is totally work for the concept of like text data. Just wait, I'm sharing my screen. Okay. So the next thing is, what is NLP? So NLP is just like a user. It is basically used to create a usual interaction between the machine and humans. Okay. So it is basically used to create interaction between humans and machine. Machine will be any type of machine like Google Assistant. So it will be a machine. Na? It will understand the human language. Whenever we will talk in any language with machine, so it will understand that language, and then after that it will decode, and then after that we will get the result of that data, which we have earlier mentioned. So the thing is that, so NLP is basically it is inside NLP, human can talk to the computer. फर्स्टली जब हम इसके पहले कुछ बात कर रहे थे, मशीन लर्निंग की बात हो रही थी, डीप लर्निंग की बात हो रही थी, हम डेटा तो प्रोसेस कर लेते थे, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर ले रहे थे कि अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर आप कहीं कैसे ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे होगा, एक बेस्ट एग्जांपल है एनएलपी का सेंटिमेंट एनालिसिस. व्हाट इज सेंटिमेंट? सेंटिमेंट इज इमोशन, somebody's emotions. Okay, I'm just talking about the human being. तो ये किसी के इमोशंस की बात हो रही है. सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग अ ट्विटर पोस्ट. ओके, मैंने कुछ टाइम पहले ट्विटर पे कोई पोस्ट किया था, एंड इफ आई एम गोइंग टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द ट्विटर पोस्ट. मैं सेंटिमेंट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझना चाह रही हूँ ट्विटर पोस्ट के बेसिस पे. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट आई हैव टू डू? So I have to analyze the comments of the user. The comments of the user. The different kinds of user will comment on your post. Some kind of user will post positive comments. Some kind of user will post abusive comments. Some kind of user will post negative comments. So how we can analyze that concept? We can analyze how we can analyze the sentiments of the human being, which those who have commented on your post. So उस टाइम पे हमें क्या करना होगा? फर्स्टली हमें कमेंट को एनालाइज करना होगा कि जो हमने कमेंट, हम सपोज मैंने कोई एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को मैं कैसे एनालाइज करूं कि उस पोस्ट पे जितने लोगों ने कमेंट किया है उनकी मेंटालिटी क्या है, या उनका जो अभी लाइक जो माइंड सेटअप है वो क्या है. तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? हमें पोस्ट में जितने कमेंट्स हैं, वी विल आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी कमेंट. हमें हर एक कमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइक जो भी पोस्ट हमने किया है, तो हमें तो हम जैसे उस पर काम कर रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन हम कंसिडर कर सकते हैं कि कौन से यूजर का कौन पॉजिटिव कमेंट है, कौन से यूजर का निगेटिव कमेंट है, कौन से यूजर का अब्यूजिव कमेंट है. तो हम लोग बस इस बेसिस कौन से यूजर का न्यूट्रल कमेंट है, तो हमने वहां से क्या किया? सारे यूजर्स को डेटा को कलेक्ट किया. ओके, देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? अब उस डेटा को हम सेग्रीगेट करेंगे. सेग्रीगेट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसमें से हमने सारे डेटा को अलग कर दिया, पॉजिटिव को अलग किया, नेगेटिव को अलग किया, न्यूट्रल को अलग किया. ओके, देन आफ्टर दैट जो भी यूजर का नेगेटिव कमेंट है, सो वी कैन इजीली एनालाइज द यूजर्स मेंटालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कमेंट. अगर कोई आपने सही पोस्ट रखा है, लाइक तुमने कुछ अगर ऐसा कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या ऑनलाइन कोचिंग का तुमने पोस्ट किया था, लोगों ने उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स दिया है, सो यू विल अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ दैट पर्सन, दोज हैव कमेंटेड ऑन योर पोस्ट. This is the concept of like natural language processing. We will not analyze because हम human being हैं, तो हम positive और negative comment को analyze कर लेंगे, लेकिन system उसको कैसे analyze करेगा? System को analyze करने के लिए NLP का ही concept चाहिए होता है. ठीक है? अगर हम Google Assistant को बोल रहे हैं कि हमें what is, suppose I'm just talking about the simple concept कि what is NLP, मैं Google को ये गूगल असिस्टेंट को मैं क्वेरी कर रही हूँ. सो हाउ गूगल विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? मैंने इंग्लिश में बोला तो गूगल विल अंडरस्टैंड इट इजीली, बट अगर कोई बांग्ला में बोल रहा है, या कोई उड़िया में बोल रहा है, या कोई कन्नड़ा में बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में गूगल कैसे समझेगा? तो ये चीजें फिर वहां पे डिकोड की जाती है. जो सिस्टम है, जो वहां पे लाइक फीचर एक्सट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे ये चीजें
क्या करी जा रही है कि जो भी यूजर का कमेंट आ रहा है, सो यूजर के कमेंट को वहां पे क्या किया जा रहा है कि उसको उस क्वेरी के वर्ड्स के बेसिस पे उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली एनएलपी जो है हमारा एक मीडियम है जो कि मशीन्स एंड ह्यूमन बीइंग के मतलब ह्यूमंस के बीच में क्रिएट किया जा रहा है। इसके पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, वी डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट लाइक एनएलपी। ओके, इसके पहले एआई में ये सारी चीजें हो रही, बट सिस्टम कैसे, अभी आप रोबोट्स की बात करोगे तो रोबोट को हमें कमांड देना पड़ रहा था। कैसे कमांड दे रहे थे, जो भी हम उसके इनसाइड जो भी हम सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे थे, वी नीड टू प्रोवाइड द कमांड कि वो फॉरवर्ड 10 स्टेप चलेगा, बैकवर्ड में 10 स्टेप चलेगा। बट अभी क्या हो गया, अभी सिस्टम डेवलप हो गया, अभी सारे सिस्टम एआई बेस्ड सिस्टम है। आप एक फोन भी यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड फोन, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ एआई। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है या जब भी कोई यूजर क्वेरी कर रहा है, तो सिस्टम विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो एक तरह का बोल सकते हैं कि एनएलपी इज अ मीडियम व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन द मशीन एंड ह्यूमन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, how it will create the interaction between the machine. Firstly, human talk to the computer. जब भी आपको कुछ क्वेरी करनी होती है, you can talk with the computer so that you can ask your query. Then after that, second thing is what, computer captures the audio. Obviously, जब आप कुछ बोलते हो तो कंप्यूटर या जो सिस्टम है, जो आपका फोन है या जो आपका लैपटॉप है या जो आपका टैब है, you that system will easily capture your audio. Okay. देन आफ्टर दैट क्या होता है, जब ऑडियो को कैप्चर कर रहा है तो उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा किसी एक फॉर्मेट में। मैंने बोला व्हाट इज एनएलपी, तो सिस्टम ने क्या किया, ये चीजें कैप्चर किया। आफ्टर दैट वो क्या करेगा, व्हाट इज एनएलपी, इसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, टेक्स्ट में। मैंने जो बोला वो तो एक ऑडियो वे में गया ना सिस्टम के पास, लेकिन सिस्टम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट once the text is converted from audio data, the text data is processed. जैसे ही आपने कुछ बोला, सिस्टम ने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया। एंड जैसे कन्वर्ट हो गया हमारा टेक्स्ट डेटा, जो ऑडियो डेटा था उसको हमने टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट कर लिया, तब उस डेटा को हम प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। वंस द डेटा इज कन्वर्टेड टू ऑडियो, लाइक जो भी हम डेटा जो भी था हमारा वो कन्वर्ट हो गया, सो इट विल लाइक द सिस्टम अगेन, जब डेटा हमारा प्रोसेस हो गया, सपोज इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज एनएलपी, सो सिस्टम विल रिस्पोंड, जो भी आप गूगल असिस्टेंट है, तो वहां पे आपको सिस्टम क्या रिस्पोंड करता है, दे विल आल्सो रिस्पोंड इट इन सेम वे। वो आपको ऑडियो के वे में ही आपको जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है। So the things will be in that way. So human can talk to the computer, then after that computer captures the audio, then audio will convert it into text. After that, once the text is converted, the processing will be done there. The processing of the data will be done here. Text data will be done there. Okay. Once the processing is done, so data is converted into audio again. Why? Because user need to get that query result in the audio format. So this is the entire concept of NLP. Because as you can see, जो आप गूगल पे क्वेरी करते हो, तो गूगल असिस्टेंट को आप जब ऑडियो वे में क्वेरी करते हो तो वो आपको रिवर्ट भी ऑडियो वे में ही करता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता है कि पहले आप बोलते हो, गूगल असिस्टेंट उसको क्वेरी करता है, उसको कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद उसको टेक्स्ट कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर से वो ऑडियो में उसको कन्वर्ट कर लेता है, ताकि वो यूजर को जो डेटा दे, यूजर को जो रिजल्ट दे, दैट रिजल्ट शुड बी इन द ऑडियो फाइल, और दैट रिजल्ट शुड बी इन ऑडियो फॉर्मेट, सो दैट यूजर कैन इजीली रिस्पॉन्ड एंड ह्यूमंस कैन इजीली रिस्पॉन्ड टू दैट ऑडियो फाइल। इज इट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। Okay, now we'll focus on the next concept, use of NLP. So why we need to use the NLP? Because I've already mentioned the three things, that is deep learning, machine learning, AI. So these all are the interrelated things. NLP will be also will be the part of AI. But the concept why we need to use the concept of NLP. Okay, so basically, as we can see, as I have mentioned earlier, Google Translate. Okay, NLP is just like a language translate application, and which is basically used inside Google. We can see
live example of language translator like Google. Google Translator is also used to translate your language into Hindi to English, English to Sanskrit, Sanskrit to Hindi. So these are the concept of NLP. For that purpose, we need to use the NLP concept. Okay. NLP का जो यूज है वो क्या है कि आपने अगर कोई एक लैंग्वेज में बोला, सपोज मैंने अगर हिंदी, मुझे अगर इंग्लिश नहीं आ रही है, आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक हिंदी टू इंग्लिश. अगर मैं मान के चलो कि मुझे कहीं पे एंट्री के लिए मुझे परमिशन लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने हिंदी में बोला, बट गूगल ट्रांसलेटर जो है वो क्या करेगा, उस हिंदी के बोले हुए वर्ड को वो क्या करेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैंने ये बोला, एंड आई हैव जस्ट मेंशन गूगल ट्रांसलेटर में मैंने ये वर्ड बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. सो गूगल ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, उस हिंदी के बोले हुए वर्ड को, ऑडियो को वो क्या कर रहा है, वो या फिर जो आप रिटर्न टेक्स्ट डेटा मेंशन कर रहे हो, जो टेक्स्ट डेटा, जो भी डेटा, क्वेरी डेटा आपका हो, क्वेरी डेटा, उसको वो क्या कर रहा है, वो चेंज कर दे रहा है इंग्लिश में. तो वो क्या करेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ. So it will translate it into may I come in sir या may I come in. So this is the way through which Google Translator is working. So that is also part of like machine learning, NLP. That is also part of like NLP. Okay. Next is Grammarly. Okay, so most of you are not aware about the Grammarly concept. Suppose if you are writing any content, okay, so there is one application Grammarly. Okay, मतलब हम जब कोई कंटेंट लिखते हैं, आप मान के चलो आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन करने के लिए, या फिर आप एक रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो प्लेसमेंट में बैठने के लिए. सो यू आर मेंशनिंग अबाउट योर इंटरेस्ट, योर हॉबी एंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, so in that situation, suppose if I'm mentioning a wrong grammar or wrong grammar, like there will be some kind of grammatical mistakes in that resume. So what I have to do? So Grammarly will easily check that grammar mistakes in your resume. Okay, हम कहीं भी देखोगे आप, जैसे कि आप मेल आपने देखा होगा, आपने कभी मेल किया होगा किसी को, तो वहां पे भी ग्रामरली होती है. अगर आप कोई एक मेल का लाइन कंपोज करते हो ना, तो अगर आपने कुछ ऐसे अनस्पेसिफिक वर्ड वहां पे मेंशन कर दिया है, तो क्या करेगा, गूगल आपको सजेस्ट करेगा. वहां पे जीमेल जब जाते हैं ना, जीमेल में जब हम मेल करते हैं ना, तो वहां पे आपको क्या करेगा, जो मेल में भी ग्रामरली, ये जो सारी चीजें गूगल की बात हो रही है ना, ये सारे एलपी पे काम कर रहे हैं अभी. ठीक है, वहां पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सजेस्ट किया जाएगा कि द वे व्हिच यू हैव मेंशन इज नॉट अ राइट वे, you have to change that word, and there will be some kind of suggestion, and that is part of like Grammarly or Grammarly is it is an application. Okay, it is just an application, you can search it on Google. Grammarly is just an application which is basically used to check the grammar of any content. आप कोई भी कंटेंट यूज कर रहे हो, लाइक आप एक वर्ड फॉर्मेट ही बना रहे हो और ग्रामरली में आप उसको चेक करोगे, so it will easily rectify all the errors, all the grammatical mistakes of that content, and it will also suggest the right one grammar or right word for that mistakes. So this is the part of like NLP. So we can easily rectify the errors, we can easily rectify the grammatical mistake which we have done in our content writing. Okay. Okay, now the next thing where we can use NLP, so interactive voice response application. So sometimes in a call center, as you know about the call centers सब लोग को पता होगा शायद कि जैसे कि मान के चलो आप फोन यूज करते हो, ठीक है, तो जब फोन का बैलेंस खत्म होने वाला रहता है ना, तो आपको कॉल आते हैं, बैलेंस खत्म होने वाला होता है या रिचार्ज खत्म होने वाला है, सो यू आर गेटिंग कॉल फ्रॉम कंपनी. लाइक मैं अगर जियो का फोन यूज कर रही हूँ, सो बिफोर 3 or 4 days आई गेट द कॉल फ्रॉम कंपनीज टू गेट द रिचार्ज फॉर another month or another time. So there will be some kind of interactive voice response. Okay, एक तो ये हो गया, एक और मैं बताती हूँ. If you are getting some kind of like call from different telecom company, okay, so they will ask you to press this button, then after that you will choose another option. मतलब आप कुछ भी एक सिंपल सा बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई पहले जैसे होता था कि आपको कोई एक कॉलर ट्यून ही सेट करना था या कोई रिंग कॉलर ट्यून अगर आपको सेट करना होता है, सो दे विल आस्क यू टू एंटर दी
key number, means you have to enter one, then after that they will confirm this song as your caller tune. So this is the interactive voice response. ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स. ये जनरली कॉल सेंटर्स में यूज होते हैं. ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब एयरटेल का आप सर्विस के लिए सर्विस सेंटर में कॉल करते हो, सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स. इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स वहां पे एप्लीकेशंस, इस तरह के एप्लीकेशंस वहां पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं. जब भी यूजर कोई कॉल करता है किसी भी इश्यूज को लेकर, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को लेकर, तो दे विल फर्स्टली इंटरेक्ट विद द इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स एप्लीकेशन. आपको 2-3 बार वो प्रोसेस करवाएगा कि यू हैव टू प्रेस दिस बटन फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस बटन फॉर मैसेजिंग, फॉर दिस बटन फॉर कॉलिंग, फॉर दिस बटन फॉर डिफरेंट चीज के लिए वो आपको सजेस्ट करेगा. देन आप ऑप्शन चूज करते हो. अगर आपको किसी वहाँ के वर्कर से या वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनसे अगर आपको बात करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, so you have to enter the proper you have to enter the proper option, and then after that you are able to talk with the employee of that company. So this is the interactive voice response application. ये भी हमारा NLP के थ्रू ही काम कर रहा है. If you are calling on in any telecom company, so they will basically ask you different question. So that thing is already implemented in the system. And once you have entered all the mentioned point, मतलब आपको जितनी चीजें बोलेगी आपने अगर mention कर दिया, then you are able to sort out your issue. So this is the part of like NLP. ये भी कहीं ना कहीं NLP का ही एक पार्ट है जो कि अभी टेलीकॉम कंपनी बेसिकली यूज कर रही है, जो कि जनरली कॉल सेंटर्स में यूज हो रहे हैं. ठीक है. Now the next thing, as we know, Alexa, Siri, OK Google, Cortana, so these are the personal assistant. As we can say, because हम लोग अभी जो फोन यूज कर रहे हैं, so we are using OK Google. So when we use OK Google, so Google वहाँ पे क्या होता है कि Google will try to understand, try to listen your audio which you will ask Google to do some kind of work. आप जब भी कोई Google को काम करने वाले जैसे OK Google आप करते हो ना, तो Google क्या करता है, वो अपना वॉइस असिस्टेंट वाला जो सिस्टम है उसको ऑन कर देता है और वो आपकी जो भी आप बोलते हो वो सारी चीजें वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है और फिर जाकर वो आपको उसके अकॉर्डिंग सजेशन शो करता है. मुझे पता करना है कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ उसके पास में रेस्टोरेंट, मतलब उस मैं जहाँ पे मेरा जो लोकेशन है उस लोकेशन के पास में कौन सा रेस्टोरेंट है. सो फर्स्टली आई विल आस्क दी गूगल. मैं सर्च नहीं कर रही, मैं टेक्स्ट डेटा पे काम नहीं कर रही, मैं ऑडियो डेटा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे हम काम कर रहे हैं. हमने क्या किया, सिर्फ ओके गूगल किया और गूगल को पूछा रेस्टोरेंट नियर मी. तो उसने क्या किया, मुझे जितने भी मेरे नियर बाय में जितने भी रेस्टोरेंट्स थे, Google will suggest all the restaurants according to their prices, according to their policy and according to their जो भी उसके terms and condition है उस basis पे. So these are the things, these are the use of NLP, these are the things where we can use the NLP concept. Means we can use in Google Translator, we can use it in Grammarly, we can use it in interactive voice response system, in call centers, and again we can say we can use it in Alexa, Siri. So these are the voice assistant. So it is basically Alexa is basically used for personal assistant or home assistants where we can ask Alexa, okay Alexa, play some music. So Alexa will start to play some kind of music. So this is the personal assistant application, which is basically, it is totally based on the concept of like NLP. Okay. So now the next thing, techniques in NLP. So NLP में जो हम काम करेंगे, because हमारा काम है natural language को process करना, लेकिन ये कैसे possible होगा? So there we must need to focus on two things, syntactics and semantics. What is syntactics and what is semantics? Syntactic and semantics are the key techniques which is basically used to complete the task of natural language processing. So syntax means what? Can anybody tell about syntax? What is syntax? Proper way to do something. Proper way to do something. Okay. Anybody else? Structure. Structure. Very good. Okay. So basically, whenever we are going to use NLP to analyze the concept of like text classification, to analyze the concept of text, to analyze the data of the text, so we need to focus on two concepts, syntax and semantics. So syntax is what? Like structured. Okay. अगर हमको कोई भी डेटा प्रोसेस करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे स्पैम को ही ईमेल को ही आइडेंटिफाई करना है कि जो ईमेल में मुझे मिल रहे हैं, इज दैट ईमेल
a spam mail or it is not a spam mail. So how we will identify that thing? So it is totally based on the structured. हम system हमने system में कर दिया. आपने जब Google आप जब Gmail open करते हो, so there you are getting some kind of option like spam mail. Mark it as spam. अगर आपको कोई एक mail आता है, so there will be some kind of option like spam. So you can mark that mail. You can mark that mail resource as spam. तो अगर आप उसको spam mark कर देते हो ना, तो वो उस resource से जब भी मेल आएगा वो आपके spam box में जाकर वो मेल सेव हो जाएगा. ठीक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है सिस्टम कि जो आपका मेल आया है that mail is spam mail. It is totally based on concept of स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहा है जो रिसोर्स है, जो डोमेन नेम है, जो रिसोर्स का नेम है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग NLP will work. क्योंकि NLP में दो चीजें ही काम करती हैं. फर्स्ट थिंग इज सिंटैक्स एंड सेकंड थिंग इज सिमेंटिक्स. सो सिंटैक्स इज व्हाट? इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर. Okay, the syntax means what? It is the positioning of words in a sentence in such a way that they make sense grammatically. Okay, now the next thing, that is semantics. Semantic is what? What is semantic? Can anybody tell about semantic? Meaning like the same. Okay, very good. Meaning like same. Semantic analysis just focus on identifying the meaning of language. The language which we will write in our program, in our system. So semantic analysis will analyze. Suppose if I am going to watch a movie, or after watching the movie, someone has asked me to get to provide some kind of review about that movie. Okay, मैं हम चार लोग गए मूवी देखने के लिए. अगर उस मूवी के देखने के बाद एक पहला पर्सन का जो क्या बोल सकते हैं, पहले पर्सन का जो रिव्यू था, मूवी वाज गुड. सो हाउ यू कैन एनालाइज दैट कमेंट? आप इस कमेंट को कैसे एनालाइज करोगे? इज इट पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव? कैसे एनालाइज करोगे? First person has mentioned the review of that movie as movie was good, so we will analyze it as positive comment for movie, positive review for movie. So one person, again the other person has mentioned I am not interested in this kind of movie, so this kind of comment is like neutral. Okay, the movie was not good, so this kind of comment is known as what? This kind of comment is known as negative comment. So the main thing is that whenever we are going to process our data, whenever we are going to process our text, so in that situation we need to analyze, we need to focus on identifying the meaning of the language which we are going to process, the language which we are going to analyze. So this is the concept of like semantics. Okay, it is also, semantic is also used to analyze the structure of the sentence. स्ट्रक्चर क्या है, जो सेंटेंस हमने लिखा है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके वर्ड इंट्रैक्शंस क्या है, उसके जो भी वर्ड है उनके रिलेशन का कॉन्सेप्ट्स क्या है. सो वो सारी चीजों को एनालाइज करेगा. सिंपली वो किसको फोकस करेगा? सिंपली वो मीनिंग को फोकस करेगा. जो लैंग्वेज हमने यूज किया है उस मीनिंग को फोकस करेगा. हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे लिए अगर 4% का हमने मूवी के रिगार्डिंग अगर फीडबैक लिया है, एनालाइज करना इजी है. बट हाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट? बिकॉज सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज द इमोशंस. सो इन दैट सिचुएशन सिस्टम क्या करेंगे? दो चीज पे काम करेंगे, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स. सो सिंटैक्स इज बेसिकली यूज्ड टू एनालाइज द फॉर्मेट, and the semantic is basically used to focus on the meaning of the language which we are going to mention in our statement. So this is the concept of like syntax and semantics in NLP. So both this part will play important role, both these things will play important role in analyze the concept of text data. Okay, so I have mentioned ना कि आप जब भी मुझे मान के चलो मुझे एक NLP के कॉन्सेप्ट पे एनालाइज करना है कि जो यूजर ने कमेंट दिया है वो कैसा है. सपोज अगर आपकी मैं बात करूं, अगर इस सेशन के बाद अगर आप कमेंट देते हो, सो समवन विल मेंशन यस सेशन वाज गुड, समवन विल mention no I was not interested in that kind of session, someone will mention no I don't like this kind of session, I don't understand this session. So these are the comments, so we can understand it easily, हम इसको easily समझ लेंगे. बट सिस्टम इसको easily नहीं समझेगा. सिस्टम को समझने के लिए क्या करना होगा? एनएलपी कॉन्सेप्ट को लेना होगा. और ये एनएलपी कॉन्सेप्ट के में जो हम काम करेंगे, ये दो ही चीज पे काम करेगा, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पे. हमने अगर कोई वर्ड लिखा है तो उस वर्ड का
फॉर्मेट क्या है, उस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, एंड दूसरा चीज क्या है कि उस वर्ड को जो सपोज हमने कोई एक लाइन या कोई एक सेंटेंस लिखा है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एंड दूसरा उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो ये दो चीज पे ही हम काम करेंगे। तो उस बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि किसी भी यूजर का या किसी भी जो रिव्यूअर है उसका मतलब रिव्यू कैसा है किसी भी मूवी के रिगार्डिंग या जो भी है, जिस एप्लीकेशन से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो दिस आर द कॉन्सेप्ट which we will see in next or in upcoming days in NLP course. Okay, thank you. Is there any question? Is there any question? किसी के No, ma'am. Okay. Okay, I'm just sharing the WhatsApp group link in the chat box, so it will be easy for you to join the WhatsApp group so that we can communicate easily for the next day session. Okay, so all of you are requested to please join the WhatsApp group because communication will be easier for us.